So let's begin. Hello everyone, I'm Dr. Omkar Sangita Diliprao Sononi, a part of Team AFMG, and today we are extremely elated to welcome on board Dr. Priyanka, who has successfully cleared her foreign medical graduate examination in the recently conducted FMG June 2022 session. First of all, heartiest congratulations, Dr. Priyanka, and we are glad to welcome you here on the other side of the fence now as a successful doctor, and I hope you become a successful clinician in the future as well. So now, first of all, I would like you to introduce yourself to our audience. Please go ahead. Okay, so thank you so much, first Dr. Omkar sir. Oh, myself, Dr. Priyanka Pradeep Sawan, and I'm from Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia. Great, great. So now, first of all, Dr. Priyanka, this is a very important session because most of the upcoming FMG aspirants look up to the seniors who have successfully cleared the examination, because most of us, they are in a dilemma when they start their preparation, right? So because they are confused, what should be our strategy, what should be our approach. So it's always better that they take the inspiration from the seniors and then they begin their preparations. So that is the reason why we'll be conducting today's interview, and we will expect you to answer some of our questions. So let's begin. Yeah, sure. Yes. So my first question to you, Dr. Priyanka, would be, why only medicine? Why did you choose this profession at first place? Actually, first of all, though it was my childhood dream, but actually I had a doctor in my family, that is my uncle, and I used to go to his place when I was small, and there many people used to come, and he used to get satisfaction seeing them happy after treating them. So from that day onwards, I decided, अगर मैं कुछ लोगों को देती हूँ और वो खुश हो जाते हैं, तो I'll get satisfaction, like. So मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मुझे ये प्रोफेशन चुनना है, तो I just went for it. That's great, and that's a very noble thought, by the way. Yeah, because किसी की हेल्प करना तो हमारा काम है, तो I was like, I just went for it. Great. Then, how was your journey over there in Smolensk State Medical University? How did you spend those 5 to 6 years, and how you were as a student? Actually, it was very nice. I miss those Smolensk days. I wish I could go back to those days. I was like, I loved my life in Smolensk. I enjoyed it. But I was studying for my exams also, though. But I didn't study for this FMG there. Seriously, I didn't study a single subject over there. But for their academics, I used to study. Right. But it was a wonderful life. So what would be your suggestion to the ones who are watching over there in their med school itself right now, who are in their first, second, third year? What is your suggestion for them? Yeah, my suggestion is they can start in fourth year, third year. Starting from the third year, they can start actually. But if they can't also, then it's not that it's वो possible नहीं है. After 6 years also, it is possible. जो 5 महीने होते हैं हमारे पास, उससे हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैंने पहले पढ़ा नहीं तो अब कुछ नहीं होगा. ऐसा मतलब ऐसा सोचना ही नहीं है. लोगों की ऐसी सोच होती है कि अरे मैंने तो 6 साल बर्बाद कर दिए, अब तो कुछ नहीं होगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर बाद में 5 महीने आप मेहनत से पढ़ो तो सब कुछ पॉसिबल है. ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है. सिर्फ हमें कॉन्फिडेंट रखना चाहिए और अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए. पॉसिबल है, क्योंकि मैंने देखा है वहां पर नहीं पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे आके टॉप करते हैं. ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है. That's true. That's really true, because the most important thing that we FMGs lack, is actually confidence. So, that's the most important thing. We need to believe in ourselves. That's the important thing that you have pointed out. Now, I actually want to know that when was the time you started your preparations for FMG, and how did you start with? Yeah, actually, I started my preparation 1 year back. That is just after my graduation, after 6th year. I passed out in 2021. Okay, and then I started it, and then I joined AFMG. It was the best coaching institute ever. I was like institute of choice. जैसे हम बोलते हैं ना drug of choice, जैसे ये वो institute of choice था मेरे लिए. वहाँ पे डॉक्टर विकास सर मिले, जो मेरे लाइक ऐसे गुरु थे, जो उन्होंने कॉन्फिडेंट बढ़ा दिया. और बाद में सभी फैकल्टी तो अरे भगवान के समान थे. तो विदाउट देम इट वाजंट पॉसिबल एक्चुअली. Right. Actually, the credit goes to my parents and AFMG team. That's true. So my question was, next one was related to this itself.
First of all, please tell us that from where did you get the reference of AFMG, and then what role did AFMG actually play into your preparations? Actually, I got to know about AFMG from my group mate only, like Ahish Krishna. Like he introduced me to the AFMG. He was also the student of AFMG, and he also succeeded, and he got amazing marks because of you guys. And AFMG was like my only source of preparation. मैंने और कुछ दूसरा source नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा मैं एक जूनियर्स को एडवाइस देना चाहती हूँ, अगर आपको करना ही है तो सिर्फ एक सोर्स के पीछे रहो. अगर ऐसा नहीं है कि आप प्री प्लैडर से पढ़ो, मैरो से पढ़ो ऐसा, और बाद में सब कुछ मिक्स हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं. और हमारे एएफएमजी वालों ने लाइक कंसाइज नोट्स दिए थे, तो वो जरूरी नहीं है कि आप इस ऐप से पढ़ो, उस ऐप से पढ़ो, सब कुछ मिक्स हो जाए. तो सिर्फ एक ही अपने आप पर मतलब भरोसा करके एक ही इंस्टीट्यूट का ही पढ़ो, और मेरे लिए तो वो एएफएमजी था. Right. That's a very important advice, Dr. Priyanka, because that is the confusion like most of the people like are worried about. Most of them feel like they have a FOMO, fear of missing out, that something would be missing out in this coaching institute or that coaching institute. So that you have rightly pointed out in the FMG that you get the concise notes and therefore it is Yes. possible to revise them multiple number of times. हाँ, मुझे बताना था कि जो 250 मार्क्स का तो आ जाएगा ही, मतलब नोट्स में ही रहता है, इधर उधर रहने का मतलब ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाकी के 50-60 मार्क्स रहेंगे वो तो पर्पसली वो ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जो किसी को पता नहीं होता है, और इसलिए तो लाइक सब कुछ नोट्स में ही होता है, किसी और सोर्स के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं होती है. That's true. That you have rightly pointed out that कि एक या दो uncommon questions which doesn't commonly appear in the exam, उसके पीछे अगर हम जाएंगे and then we change our notes, then I feel that's a biggest mistake that people usually do, right? So now I wanted to ask you, तुम आपने तो rightly point out किया कि definitely the notes were concise and they were more than enough to pass your FMG. Yeah, definitely. Yeah. What is your take on AFMG faculties? Like, did they teach conceptually? Did they integrate different subjects? Because nowadays the exam is becoming more conceptual and integrated. So what's your take on that? First of all, I would like to give a huge respect to the whole faculty, and they actually played a huge role in my life. And actually like वो क्लिनिकल, अब तो क्वेश्चंस तो क्लिनिकल बेस ओरिएंटेड हुआ है, जो मतलब सब कुछ इंटीग्रेटेड हुआ है. तो लाइक ऐसा नहीं था कि एफएमजी में कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट के बारे में मतलब इसी लाइक पढ़ा है, तो वो सब हमें इंटीग्रेटेड करके पढ़ाते थे. Right, that's more important now. Then I would like to ask you, how was your experience with AFMG overall? Because people usually have like when they study on their own, definitely they cannot maintain the pace. Consistency nahi reh pati hai. The schedule is not regular. So like how did AFMG help you in that? And yeah, what was our part in it? एक्चुअली मैंने जो कोचिंग ज्वाइन किया वो सही ही किया, क्योंकि जहाँ पे हमें डॉक्टर विकास सर मिले वो हमें गाइड करते थे, और बच्चों यही करो, मतलब दिन में 50 MCQs तो होना ही चाहिए, जो और किसी ने नहीं बताया हमें. ओके, सिर्फ एएफएमजी के सर ने ही बताया. और बाद में वहाँ के महेश सर, सोनिया मैम, वो तो हमेशा हमारे साथ ही थे. ऐसा नहीं कि वो नॉन टीचिंग फैकल्टी है तो हमारे साथ नहीं है, वो भी हमारे साथ ही थे. और बाद में एएफएमजी एक शेड्यूल बना के देते हैं, ये मंथ में ये होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए, और कैसे हमें किस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, एमसीक्यूज का सोर्स क्या है, मतलब हमारे एएफएमजी ऐप पे भी उन्होंने डाला है. बाद में मॉक टेक्स्ट देते थे एएफएमजी ऐप पर, सब कुछ अवेलेबल था. ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा उन्होंने, और हमारे पीछे पड़ के लाइक किसी भी तरह के मतलब हमारे साथ नहीं थे. लाइक घर जाओ कहीं जाओ तो वो ऑनलाइन बच्चों के भी साथ ही थे. That's true. ऐसा हमारा साथ उन्होंने एग्जाम सेंटर के बाहर आने तक नहीं छोड़ा, एग्जाम लिखने के बाद भी एग्जाम सेंटर के बाहर आने तक नहीं छोड़ा. That's true. That's most important because this is actually a teamwork, and definitely you have mentioned about Maheshji and Sonia ji. Definitely they play a huge role in huge role, and yeah, that's the most important thing. Then, और आप लोग तो एग्जाम के दिन इतना हमारे लिए ये मतलब जो बाहर सनलाइट होती है वहां पे तड़प के सब बच्चों को ऐसे मतलब उनका ये एक्साइटमेंट सब कुछ लाइक दैट वाज लाइक ग्रेट. That's right.
Now, I need to ask you, ki in AFMG, apart from the notes, definitely, I hope that your notes would have been your primary source, right? But apart Yes. from that, usually people change. क्या होता है कि notes से पढ़ते हैं, but end में बहुत सारे sessions होते हैं. In AFMG also we have revision sessions, chanting sessions, test and discussions. So people directly switch on to that. ठीक है. So not switching on directly, rather using it or utilizing it in a good manner to help your preparations. How did you do that? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा प्राइमरी सोर्स नोट्स था, एएफएमजी का नोट्स था, तो वो मैंने 2-3 बार पढ़े थे. उसके बाद जो टेस्ट एंड डिस्कशन होता था, दैट वाज वेरी वेरी लाइक इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो टेस्ट एंड डिस्कशंस था उसमें ना वो कॉन्सेप्ट लाइक वो जो पास्ट पेपर्स थे, पास्ट ईयर्स के पेपर्स, वो मतलब वो क्वेश्चंस रहते थे और कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है एग्जाम का. मतलब क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स डिफरेंट हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट एंड डिस्कशंस अटेंड करो. लाइक दैट इज लाइक हेल्प मी अ लॉट. And after that, like chanting session, like what, like chanting meaning first I studied and then only like I went into the chanting, because अगर आप primarily notes पढ़ते ही नहीं हो तो chanting का कोई मतलब नहीं है, seriously. That's true. ऐसा नहीं है कि अब मैंने सिर्फ चैंटिंग देखा और सब कुछ हो गया, तो मतलब बेसिक क्लियर नहीं है तो वो चैंटिंग का मतलब नहीं होता है. That's more important, right? Because I always mention while taking chanting sessions that usually we have time constraints and therefore concepts are to be understood in your classes, and then definitely we are here to help you memorize things. बट चैंटिंग सेशन मुझे हेल्पफुल है. जब वो क्वेश्चंस आता था एग्जाम में, तब मैंने तो आपकी आवाजें सुनी, अरे यार ये तो यही क्वेश्चन है और यही आंसर है, सीरियसली सर. तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो लाइक ओमकार सर की आवाज सुनी. So pleased to know that. Then, Dr. Priyanka, I would like to know how did you devote your time actually in a day for your classes, then having your revisions and also practicing MCQs? How did you manage your time with that? एक्चुअली मैंने सिर्फ दिन में ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती रही क्लासेस के अलावा मैंने 4 घंटे तो पढ़े ही होंगे दिन में, 4-5 घंटे पढ़े ही है. मतलब कंसिस्टेंसी थी, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कल नहीं पढ़ा. मतलब पढ़ो लेकिन कंटिन्यूअसली, मतलब वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके साथ. और एमसीक्यू को मत छोड़ना. मतलब मैंने क्या किया, अगर मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मैंने वो बाद में दूसरे कॉन्सेप्ट पे नहीं गई, मैं उसी कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज करती थी. और दिन में मैं 50-60 एमसीक्यूज तो करती ही थी. ऐसा नहीं कि सिर्फ आज सिर्फ थियोरी किया, कल एमसीक्यू करेंगे, ऐसा नहीं. दोनों बराबर होता था. पहले कॉन्सेप्ट करो, बाद में उसी कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज करो, तो ही आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट आता है जब आप एमसीक्यूज करते हैं तब. बिकॉज आफ्टर ऑल ये तो एग्जाम एमसीक्यूज का होता है. तो या that's more important. यही सही बात आपने point out की कि it's not only about the theory, you need to also learn to apply that knowledge into your apply this thing. That's the most important thing, right? और अब तो क्वेश्चंस क्लिनिकल बेस हो गया है, तो लाइक विदाउट एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, डायरेक्टली जाके बैठे हो एग्जाम में, तो कोई मतलब ही नहीं है. Right. As you have rightly mentioned, Dr. Priyanka, my next question would be related to that. You have said that the questions are clinically based. You have not mentioned they are only from clinical subjects, right? Because I have seen like people complaining about the paper 1 a lot. Like they were facing difficulties with the pre and paraclinical subjects because they think that questions are only coming from clinical subjects. So what is your take on that? And इस exam के बारे में what was your approach and how did you feel was the exam? तो फ्रैंकली टेलिंग तो मुझे जो क्लिनिकल क्वेश्चंस लगे वो इजी लगे, क्योंकि क्या होता है पता है आपको, जो क्लिनिकल केस आते हैं ना, वो केस में आपको सब कुछ दिया हुआ होता है और वो मिल जाता है आंसर. और 1 लाइनर्स तो खतरनाक होते हैं बड़े, सिर्फ एक ही लाइन होती है, तो हम सोच में डूब जाते हैं कि अरे हाँ ये आंसर होगा, ये आंसर होगा करके. लेकिन क्लिनिकल केस मुझे, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है ना, तो एक्चुअली लाइक मुझे क्लिनिकल क्वेश्चंस मतलब इजी लगे एक्चुअली दिस टाइम एज कंपेयर टू 1 लाइनर्स, बिकॉज 1 लाइनर्स बड़े खतरनाक होते हैं. That's true. So क्योंकि क्लिनिकल्स में ये कैच पॉइंट होता है, अगर ये है तो हाँ यही आंसर होगा करके, मतलब हिस्ट्री दी हुई होती है. That's true. You need to pick the keywords and then definitely it becomes a lot easier, right? So then sometimes अगर full क्वेश्चंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है, जस्ट कीवर्ड्स लेके हाँ ये 10 सेकंड में आंसर हाँ यही होगा करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो रिपीटेड होते हैं. राइट.
would you suggest people who are aspiring for the next FMG session to actually also focus on the pre and paraclinical subjects, because one liners तो उन subjects पे ज़्यादा बनता है actually. So what Yes. would be your suggestion? मेरा सजेशन है कि वो जाए। और पहले ना ऐसे होता है कि लोग ये पेपर 1 का सब्जेक्ट से छोड़ देते हैं, और उसी वजह से मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे रुक जाते हैं, क्योंकि पेपर 1 उतना ही जरूरी होता है जितना कि पेपर 2। मतलब एनेट, बायोकेमिस्ट्री, मतलब ये सब कुछ उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर पेपर 1 अच्छी तरह से गया ना, तो बाद में पेपर 2 में और ज्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ता है, तो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। Right, that's most important, I feel so. Then I would like to just ask you, like, as I know you from a long time now, and like I would like to mention this thing because people are usually stressed out. People face a lot of difficulties, definitely. But I want to tell my audience ki you need to learn from this girl because she is being so strong, so resilient in her journey. Definitely, she has faced a huge loss, right? So I feel that was a huge personal loss that you suffered, and even though you were in a state that you could just ace in your examination, because definitely losing one of the parents is not an easy thing. So how did you manage with that? People आजकल तो यार मतलब गर्लफ्रेंड चली जाए, बॉयफ्रेंड चला जाए, उसी पे लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट करे जाते हैं. So what is your advice to these kind of people? Yeah, actually, I had lost my mom in through this journey, but I was like in a depressed mood. But मैंने सोचा कि बाद में कि उनके लिए कुछ करे, मतलब पेरेंट्स के लिए कुछ करे, तो I was like depressed, but ऐसा नहीं था कि अरे डिप्रेस हो तो डिप्रेशन में ही चली जाओ. तो I made up courage, I got up, but my friends and AFMG team, whole team was with me. Like you also helped me a lot to get a courage. And then I would like to mention my friends like and my seniors who were with me, like Kimaya, Amruta, Rohit, Simola, Saili. They were like constantly supporting me, and I got up because of them only, and because of AFMG ka support. And it wasn't possible because they were like my constantly supporting me, because it was because of you guys only that I cleared this exam. It was your hard work, your consistency, and your courage and resilience that has actually helped you through this journey. And definitely, people surrounding you have because also play a very like important AFMG role. is like a family. They like, yeah. We are, and we Once will again, thank you so much. My pleasure and our pleasure. Because अगर किसी को पर्सनल इश्यूज भी आते हैं तो ये हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं. That's true. That's true. We mean it by when we say that AFMG is a family, and we are through we are with you throughout this journey. That's true. Now, I would like to ask you if you need to mention any of the particular faculties, and if you want to give them any message particularly. एक्चुअली मुझे सभी फैकल्टी बहुत पसंद आए, तो मैं कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, लेकिन सभी मेरे लिए इक्वल समान है, क्योंकि विदाउट ईच एंड एवरी टीचर ये पॉसिबल नहीं था. अगर किसी को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वॉज इम्पोर्टेंट. और मैं ये बात जूनियर्स को बोलना भी चाहती हूँ कि कोई सब्जेक्ट छोड़ के मत जाना, क्योंकि सब पेपर इंटीग्रेटेड आता है. अब सब्जेक्ट वाइज पेपर नहीं आता है. मैंने देखा है कि इस सब्जेक्ट से मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ कि एनेट में से 15 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 15 मार्क्स का आएगा. ऐसा नहीं होता है. पेपर इंटीग्रेटेड होता है. कहाँ से भी किसी सब्जेक्ट से भी किसी मार्क्स आ सकते हैं. ऐसा नहीं है. तो इसीलिए आप प्लीज सब क्वेश्चंस मतलब सब सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना. That's more important. और मेडिसिन तो कभी मत छोड़ना. पहले तो मैं मेडिसिन हेट करती थी, लेकिन अब मुझे मेडिसिन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. Right, because people actually tend to leave those subjects. हाँ, और मुझे पता नहीं चला कि मेडिसिन से लोग क्यों घबरा जाते हैं. मैं पहले खुद घबरा जाती थी, लेकिन when I approached, like I tried learning it, I found it quite interesting. Seriously. That's true. Once you start, definitely you get interest in it. What would be your advice to your juniors or your fellow mates who are aspiring for the upcoming FMG session now? मैं सच में बताऊं तो ज्वाइन AFMG. इसके बगैर पॉसिबल नहीं था मेरे लिए. तो सीरियसली मैं बोल रही हूँ, उनको भी AFMG ज्वाइन करना चाहिए, और उनको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए. और कंसिस्टेंसी इज अ मंत्रा. मतलब ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनके यहाँ, और हार्ड वर्क.
That's true. कई सारे लोग होते हैं जो एनबीए को भी ब्लेम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअली वो अपना हार्ड वर्क होता है जो रिजल्ट देता है. Right, that's true. I totally agree with you on this, that hard work has no क्योंकि alternative कई for this सारे exam. टेलीग्राम्स चैनल्स होते हैं, वहां पे कैसे कैसे अफवाहें फैली हुई होती है, और मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था वो सुन के. लेकिन वो सब कुछ ना भूल जाना चाहिए, और उन टेलीग्राम ग्रुप्स को मैंने तो म्यूट कर दिया, और मैं लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है, जस्ट हार्ड वर्क. That's true. That's most important. Now let's come to our rapid fire round now. So I would like to ask you some rapid fire questions. Yeah, So sure, first of sir. all, you mentioned a very important point about consistency. But while maintaining consistency, definitely, do you have any bad days during this phase of your journey? या आई डू हैड बैड डेज, बट ऐसा नहीं है कि अगर बैड डेज आए तो सब कुछ छोड़ा और सब कुछ चला जाए और बाद में अच्छे दिन नहीं आएंगे. सबके लाइफ में होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे इतना ड्रेन हो गए हैं, कुछ मतलब अब कुछ नहीं जा रहा है दिमाग में, तो ऐसा नहीं कि आप वो छोड़ दे. मतलब उस समय आप कुछ थोड़ा सा म्यूजिक देखो या फिर अपनी मूवी देख सकते हो. ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ बुक में ही रहना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था मेरे लिए. मैं तो मतलब मैं जब बोर्ड हो गई तो मैं म्यूजिक चला लेती थी या फिर मेरे फ्रेंड को कॉल कर लेती थी. ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बुक में ही थी. तो एक्चुअली कई कई बार नेसेसरी होता है कि नॉन एकेडमिक्स भी करो एकेडमिक्स के साथ, वरना लाइफ पॉसिबल नहीं है ऐसा. तो That's मैं most सजेस्ट important. करती हूँ कि कोई भी आपकी हॉबी हो तो उसे पूरा सेक्रीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कर सकते हो. That's most important, because you will get exhausted at the end of the day. या अगर दूसरा कुछ डेफिनेटली. alternative नहीं है, right? That's most important. Then my next question would be, if not medicine, what would have been your alternate profession? अरे तो मुझे तो टीचर बनना था. ऐसे लगता है कि अगर टीचर बन के भी मैं कुछ समाज सेवा कर सकती हूँ, लोगों का भला कर सकती हूँ, तो मैं टीचर बनना चाहती थी. I feel you still have that choice even in medicine. Yeah, I got inspired by you, sir. My pleasure. Then my next question is, what hobby of yours you sacrificed during this preparation phase? एक्चुअली गार्डनिंग. आई लव प्लांटिंग ट्रीज और समथिंग, बट वो पॉसिबल नहीं था. म्यूजिक वगैरह तो सुन सकते हैं, लेकिन बाहर जाके गार्डनिंग करना वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो वो मुझे सेक्रीफाई करने लगा. बट आई एम नॉट सैड अबाउट इट. अब मैं मतलब आई स्टार्टेड इट लाइक अगेन आफ्टर माई दिस थिंग लाइक एग्जाम. सो अगर कोई भी अपनी कुछ सेक्रीफाइस कर लेता है हॉबी, तो कोई बात नहीं, बाद में एग्जाम के दिन एग्जाम होने के बाद आप फिर से दोबारा स्टार्ट कर सकते हो. Right, right. It's just for a बिकॉज short term. सेक्रीफाइस तो होते हैं लाइफ में. ऐसा नहीं कि लाइफ That's इज true. लाइक फुल ऑफ एंजॉयमेंट. लाइक सेक्रीफाइस जरूरी भी है थोड़े बहुत. Right, right. So what my next question would be, what is your favorite movie? ओके, गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मैं मूवीज ऐसा ज्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन हाँ, माय फेवरेट मूवी इज टू स्टेट्स, बिकॉज मुझे लगता है कि यूनिटी होनी चाहिए. लाइक आफ्टर ऑल इंडिया इज लाइक आ कंट्री, और सभी स्टेट्स में यूनिटी होनी चाहिए. तो बिंग आई शेयर्ड अ बॉन्ड विद सम अदर पीपल लाइक अदर स्टेट पर्सन, एंड बिंग अ डिफरेंट कल्चर, तो कल्चर में यूनिटी होनी चाहिए. तो टू स्टेट्स इज माय फेवरेट मूवी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू माय लाइफ. Then what AFMG feature did you like the most? We had multiple sessions, so which among them would you choose? टीचर. No, teacher, not feature. Which among Feature. the sessions you like the most? ओके, टेस्ट एंड डिस्कशन, एंड बाद में चैंटिंग का भी मेरे लिए तो धमाका ही था चैंटिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा था नोट्स, 2-3 बार तो पढ़े थे. तो चैंटिंग तो मेरे लिए इतना लाइक ओ गॉड, ऐसा रॉकेट जैसा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज मैंने बोला ना आपको, जब मैं एग्जाम सेंटर गई और क्वेश्चंस आए थे तो मुझे आपकी आवाजें सुनाई दे रही थी सच में. My next and last question would be, who has been your inspiration throughout this journey? My mom. Though she is not with me now, but actually my mom was my biggest inspiration, and she is still now. Yeah, and we are pretty sure she'll be very, very proud of you, and she'll be smiling from above. Definitely very proud of you now. So with this, I come to the end of this session. I conclude this. Again, wishing you all the very best for all your future endeavors. And again, heartiest congratulations from our team to you as well as your family. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Our pleasure.